Good morning. Today we will discuss question paper of Carmel Convent School. So our first question is, check whether the following is a quadratic equation or not. X plus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3. So we are given an equation. We need to check whether it is quadratic or not. तो simplify करते हैं. x plus 1 whole square को open करेंगे, क्या बनेगा? x square plus 2x plus 1 equal to 2 into x 2x minus 6. 2x cancel. X square plus 7 equal to 0. This is the equation in which highest power of x is 2. So this is a quadratic equation. Question number 2. Is minus 150 a term in the given AP? 11, 8, 5, 2 and so on. So let nth term of this AP be minus 150. So an equal to minus 150. What is the first term? First term a is equal to 11. What is common difference? D equal to 8 minus 11 is minus 3. So an equal to minus 150. What is an? A plus n minus 1. D is equal to minus 150. A is 11. 11 plus n minus 1. D is minus 3. Is equal to minus 150. So minus 3 into n minus 1 is equal to minus 161. N minus 1 is equal to 161 upon 3. So n equal to 161 upon 3 plus 1 is equal to 164 upon 3. So n is 54 and 2 by 3. N is not a natural number. So minus 150 is not the term of this AP. Question number 3. Express the ratios cos A, tan A in terms of sin A. So we know that sin square A plus cos square A equal to 1. We need to express cos A in terms of sin A. So cos square A is equal to 1 minus sin square A. Taking square root, cos A equal to under root 1 minus sin square A. Now we need to express tan A in terms of sin A. So what is tan A? Tan A is equal to sin A upon cos A. And what is cos A? Cos A is under root 1 minus sin square A. So tan A is equal to sin A upon under root 1 minus sin square A. Question number 4. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. So PQR is a triangle and E and F are points on side PQ and PR. State whether EF parallel QR given that PE is equal to 4 cm, QE is equal to 4.5 cm, PF is equal to 8 cm and RF is equal to 9 cm. So we need to state whether EF is parallel to QR or not. So
PE upon EQ. PE upon EQ is 4. PE is 4 and EQ is 4.5. So multiplying by 2, I can write it 8 upon 9. Now PF upon FR. PF upon FR. PF is 8 and FR is 9. So PE upon EQ is equal to 8 upon 9 and PF upon FR is also 8 upon 9. So I can write PE upon EQ is equal to PF upon FR. Okay, PE upon EQ is equal to PF upon FR. So by converse of basic proportionality theorem, EF is parallel to QR. Therefore, by converse of basic proportionality theorem, EF parallel EF is parallel to QR. Question number 5. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. Find the total surface area of the solid. So solid is in this shape, a cube on which a hemisphere is surmounted. So we are considering the case when the diameter of the hemisphere is maximum. It will be maximum when the diameter will be equal to the side of this cube, that is 7 cm. So diameter of this hemisphere is 7 cm. We need to find the total surface area of this solid. So what will be total surface area? Total surface area of solid. Area of solid is equal to total surface area of cube minus this circular region. ये स्पेस तो हेमिस्फेयर ने ऑक्युपाई किया है, ये स्पेस हेमिस्फेयर के बेस ने ऑक्युपाई किया है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट this circular region from the total surface area of this cube and plus lateral surface area of the hemisphere. So total surface area of solid is equal to total surface area of cube minus area of circular region plus lateral surface area of hemisphere. Okay, what is total surface area of cube? 6a square. What is a here? Side 7 cm. So 6 into 7 square minus area of circular region
Diameter is 7 centimeter. What will be radius? 7 by 2. So minus pi 7 by 2 square plus lateral surface area of hemisphere. What is surface area of sphere? 4 pi r square. और उसका हाफ हो जाएगा 2 pi r square. That is the lateral surface area of hemisphere. So plus 2 pi 7 by 2 square. 2 pi r square minus pi r square. So ये 6 into 49 as it is plus 5 we are taking 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. So 7 7 is 14, 7 7 cancel to 11. So what it becomes? 294 plus 77 upon 2, that is 38 upon 38.5. So this becomes 332.5 centimeter square. So total surface area of solid is 332.5 centimeter square. Question number 6. Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point lying 8 centimeter away from its center. So एक पॉइंट लेंगे सबसे पहले से O. Now 8 centimeter away from its center. This is center of the circle. जहां पे हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे. इससे 8 सेंटीमीटर अवे एक लाइन सेगमेंट बनाओ 8 सेंटीमीटर. दिस इज 8 सेंटीमीटर अवे हमने एक लिया पॉइंट से P. So first of all we will draw a circle of radius 4 centimeter. O the center से हम एक सर्कल बनाएंगे ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. ये हमने बनाया सर्कल ऑफ रेडियस 4 centimeter. Now on this line segment we will draw perpendicular bisector. So more than half हम कंपास को खोलेंगे. यहां पे कंपास की नीडल रखेंगे. एक आर्क लगाई यहां, एक आर्क लगाई यहां. अब कंपास की नीडल को हम यहां रखेंगे एंड सेम जितना हमने ओपन किया है उसी से हम एक आर्क यहां लगाएंगे एंड एक यहां और इसको कर देंगे हम ज्वाइन. So let this point be M, that is the intersection of line segment OP and the perpendicular bisector. Now taking M as center and MP as radius, we will draw another circle. Now this circle cuts the previous circle with center O at 2 points. Let these 2 points be A and B. Now join point A with point P. Now AP and BP are the required tangent to the circle with center O. Question number 7. Find the root of quadratic equation
3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0 by quadratic formula method. So comparing this equation is 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. Comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. What is a? A equal to 3. What is b? B equal to minus 2 root 6. And what is c? C equal to 2. So what is x? X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Now substituting values, x is equal to minus b. What is b? Minus 2 root 6. So it becomes 2 root 6 plus minus under root b square minus 2 root 6 whole square. So minus 2 root 6 whole square minus 4. What is a? 3. And what is a? 2 upon 2a. 2 into 3. Okay. So x is equal to 2 root 6 plus minus, what is this? 2 root 6 whole square, 4 into 6, 24. 24 minus 4, 3 is 12, 2 is 24, minus 24 upon 3 into 2, 6. So x equal to 2 root 6, this is 0, so upon 6, 2, 3. So we get root 6 upon 3. So the root of this quadratic equation is root 6 upon 3. Question number 8. The first and last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? So एक AP के हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए हुए हैं. सो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 17 एंड से लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू 350. Their common difference is 9. So D is equal to 9. So we need to find the number of terms. So AN is equal to 350. So what is AN? A plus N minus 1D equal to 350. So substituting the value, A is 17 plus N minus 1, D is 9 is equal to 350. Okay, so N minus 1, 9 is equal to 333. So N minus 1 is equal to 37. So N equal to 38. So number of terms in this AP are 38. Now what is their sum? We need to find their sum. What is sum? Sum of n terms. Sn is equal to n by 2 first term plus last term. So number of terms are 38, n is equal to 38. So S 38 is equal to 38 upon 2. First term is 17 plus last term is 350. So sum of 38 terms is 19 into
367. So 19 7 are 133, 13, 19 6 are 114 plus 13 127, 12, 19 3 are 57 plus 12 69. So the sum of 38 terms is 6973. Question number 9. Prove that sin theta into 1 plus tan theta plus cos theta into 1 plus cot theta equal to sec theta plus cosec theta. So we need to prove LHS equal to RHS. So LHS, left hand side, is equal to sin theta into 1 plus tan theta plus cos theta into 1 plus cot theta. So sin theta as it is, sin theta 1 plus tan theta को हम लिख सकते हैं sin theta upon cos theta. So sin theta upon cos theta plus cos theta 1 plus cot theta को हम लिख सकते हैं cos theta upon sin theta. Cos theta upon sin theta. Now sin theta as it is. Now taking LCM, cos theta, it becomes cos theta plus sin theta. Now cos theta as it is, taking LCM, sin theta, और ये बन गया sin थीटा प्लस cos थीटा. अब cos थीटा प्लस sin थीटा यहां है एंड cos थीटा प्लस sin थीटा यहां भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं. सो sin थीटा प्लस cos थीटा हमने ले लिया कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया. सो ये क्या बन गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये बन गया प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट. सो sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, टेकिंग LCM, sin थीटा cos थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो इट बिकम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ब्रेक करके लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा. साइन थीटा कैंसल, cos theta cancel. So 1 upon cos theta is sec theta, 1 upon sin theta is cosec theta, and this is equal to our right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Question number 10. An aircraft is flying horizontally at a speed of 1200 km per hour. The pilot of the aircraft notes the angle of depression of a point on the ground changes from 45 degree to 60 degree in 15 seconds. Find the height at which the aircraft is flying. So a plane is flying horizontally. Okay, ये aircraft है, ये horizontally fly कर रहा है. जो पायलट है, he notes that the angle of depression of a point, say this is a point, इस पॉइंट का एंगल ऑफ
डिप्रेशन, ये चेंज होता है 45 डिग्री से 60 डिग्री पे। यहां पे ये है 45 डिग्री एंड आफ्टर 15 सेकेंड इट बिकम्स 60 डिग्री। ये है एंगल ऑफ depression. So we need to find the height at which the aircraft is flying. So ये है ग्राउंड लेवल, और अगर हम ये फाइंड कर लें तो हमें मिल जाएगी हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो लेट इट बी h। ये h है तो ये भी h है। सो इनके नाम रख देते हैं A, B, C, D और E, राइट। सो एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर और A से B जाने में उससे लगते हैं 15 सेकेंड। सो वी नो स्पीड इज इक्वल टू distance over time, right? So what is this distance? Distance equal to speed into time, speed into time. What is the speed? 1200 kilometer per hour. 1200 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, सो इनटू 1000 मीटर में चेंज हुआ, अपॉन सेकंड के लिए इनटू 60 एंड इनटू 60 एंड टाइम इज 15 सेकंड। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कैंसल, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। सो द डिस्टेंस इज 5000 meter. So distance traveled by aircraft from A to B is 5000 meter. So AB is 5000 meter. AB 5000 meter है तो ED भी 5000 meter होगी. So this is 5000 meter, right? So CD को हम सपोज कर लेते हैं x. Now AB is parallel to EC and AC is transversal. So angle BAC is equal to angle ACE, alternate interior angle. So this is 45. This will be also 45 degree. ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, so this is also 45 degree. So ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। So AE is equal to EC. So I can write H is equal to 5000 plus X। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। Now AB is parallel to EC and BC is transversal. So this angle is equal to angle ECB, alternate interior angle. So this angle is 60 degree. So now in right triangle BDC, what is tan 60? Tan 60 degree is BD upon DC equal to BD is H and DC is X. Tan 60 is root 3. Root 3 is equal to H upon X. So यहां से हमें X की वैल्यू मिल गई, X is equal to H upon root 3.
So this is equation number 2. Now substituting the value of x in equation 1. H is equal to 5000 plus h upon root 3. So h इसको यहाँ लाए हम, ये बन गया 1 minus 1 upon root 3 is equal to 5000. Therefore, h is equal to 5000 into root 3 upon root 3 minus 1. इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, रैशनलाइज करो, root 3 plus 1, root 3 plus 1, this becomes h is equal to 5000 root 3, root 3 plus 1 upon 2, that is h is equal to 2500 root 3 into root 3 plus 1 meter. So this is the height at which aircraft is flying. Question number 11, case study. Energy conservation is the effect made to reduce the consumption of energy by using less of an energy service. Some children of a school prepared posters on save energy, which are shown below. Poster 1 has save energy, don't waste it. Poster 2, think green, turn off lights. Poster 3, turn the lights off when you leave. So on the basis of this information, we need to answer these questions. Refer to poster 1. If radius of circle is 21 centimeter and angle subtended by arc at center is 60 degree, the length of the arc is 22 centimeter, 28 centimeter, 33 centimeter, या none of these. So poster 1 है हमारे पास, वो एक सर्कुलर शेप का है. ओके, सो we are given radius of the circle is 21 centimeter, so this is 21 centimeter. Let it be OAB. And angle subtended by arc at center is 60 degree. This is 60 degree. So we need to find the length of the arc. हमें ये जो arc है AB, इसकी length find करनी है. भाई वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको मैं अगर मैच कर दूं AB, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ये दोनों एंगल इक्वल, मतलब 60-60, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 21 सेंटीमीटर, तो AB भी 21 सेंटीमीटर, और ये आर्क उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो एक ही ऑप्शन है 21 के पास 22 सेंटीमीटर, बाकी सब ज्यादा है 28, 33, तो 22 हो सकता है आंसर. ऑब्जेक्टिव है, ऐसे में वी कैन मार्क. ओके, वी विल डू इट विद एक्चुअल मेथड. Now length of arc AB. Length of arc AB is equal to theta, that is angle subtended by arc at center, upon 360 into circumference of the circle, that is 2 pi r. So this becomes theta is 60 degree upon 360 into 2, taking pi 22 by 7, and r is 21 centimeter. So 66, 7 3 is 21, so ये 3 2 is 6, 2 2 cancel, equal to 22 centimeter. So length of the arc AB is 22 centimeter. Next question is
The area of sector formed by the arc, radius 21 centimeter and angle of sector is equal to 60 degree is. So again पोस्टर 1 से हमें आंसर करना है. तो पोस्टर 1 है एक सर्कुलर पोस्टर जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री. ये एक सेक्टर है जो कि एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री. सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. हमें जो ये सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करना है. सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर is equal to angle subtended by sector, that is theta, upon 360 into area of circle, that is pi r square. Okay, angle subtended is 60 degree, so 60 upon 360 into pi, taking pi 22 by 7 and r is 21, so 21 into 21. 66, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11. So this becomes 231 centimeter square. So 231 centimeter square. So option B is 231 centimeter square. So option B is correct. Now refer to poster 2. What is the radius of circular region if length of poster is 18 centimeter and breadth is 14 centimeter? So ये poster 2 है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. So इस poster की जो लेंथ दी है वो है 18 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 14 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन. तो ये जो सर्कुलर रीजन है इसकी रेडियस क्या होगी? ये 14 सेंटीमीटर है तो ये 14 सेंटीमीटर होगा. मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रीजन इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा उसका? हाफ. 14 upon 2, that is 7 centimeters. So radius of the circular region is 7 centimeter. So option 3 is correct. Now D. What is the area of circular region if length of poster is 18 centimeter and breadth is 14 centimeter? Length 18 centimeter, breadth 14 centimeter. We need to find the area of this region. हमें पता है रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या होता है सर्कुलर रीजन का? पाई आर स्क्वायर. सो एरिया इक्वल टू टेकिंग पाई 22 by 7, r is 7, 7 into 7, 7 7 cancel, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, that is 154 centimeter square. So option first is correct. Refer to poster 3. E part है the area of poster is the length and breadth of it are 18 centimeter and 14 centimeter respectively is. So length हमें दी हुई है 18 centimeter, ये है 18 centimeter and breadth हमें दी है that is 14 centimeter. ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? इस पोस्टर का एरिया. ये जो एरिया है हमें ये एरिया फाइंड करना है. सो ये बेसिकली है क्या? एक इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रा कर दूं तो ये एक रेक्टेंगल बन गई. A B C D. A B C D is rectangle. रेक्टेंगुलर रीजन में से ये सेमी सर्कुलर रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया आ जाएगा.
सो ये 14 है तो ये भी 14 होगा। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन इज 7। सो एरिया ऑफ पोस्टर is equal to area of rectangle minus area of semicircular region. बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 18 इंटू 14 and minus area of semicircular region, taking pi 22 by 7 pi, radius is 7 centimeter, 7 into 7, it is semicircular, therefore divided by 2. So 7 से 7 cancelled, 2 11. So ये बन गया 18 for the 72, 7 18 बन जाए 18 and 7 25 minus 77. So ये बन गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। So area of this poster is 175 centimeter square. Question number 12. State Pythagoras theorem. Hence prove that if in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that 4BD is equal to BC, this is given to us, then 16AD square is equal to 13BC square. So what is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. So Pythagoras theorem is Pythagoras theorem, theorem. In a right angled triangle, square of hypotenuse is equal to sum of square of its two other sides. Okay, this is our Pythagoras theorem. अभी हमें क्या प्रूव करना है? That if in an equilateral triangle ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास A B C, ठीक है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, तो D को हम एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट D, such that 4BD is equal to BC. Suppose BD is A, तो 4BD is equal to BC means BC is equal to 4A, BC is equal to 4A. So this side is 4A and this is equilateral triangle, so ये भी 4A, ये भी 4A, और 4A minus A is 3A, so DC is 3A, so DC is 3A. Now we need to prove 16AD square is equal to 13BC square. AD क्या है? AD is this length. So 16AD square is equal to 13BC square. This we have to prove. So इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे साइड BC पे फ्रॉम पॉइंट A. तो ये एंगल जो है ये है 90 डिग्री से, दिस पॉइंट इज E.
So ये ABC is an equilateral triangle and A is perpendicular. So E is the midpoint. So total length BC की है 4A, तो EC की लेंथ कितनी हुई 2A. Okay. So applying Pythagoras theorem in triangle AEC. So in triangle AEC, hypotenuse square AC square is equal to sum of square of other two sides AE square plus EC square. AC square कितना है 4A square. 4A square is equal to A square as it is. Then EC is 2A, so EC square is 2A square. So A square हमारे पास आ गया, A square is equal to 16A square minus 4A square. So AE square is equal to 12A square. So AE square is 12A square. Now in triangle ADE, this is also right angle triangle. So again applying Pythagoras theorem. What is hypotenuse? AD. So AD square is equal to sum of square of other two sides AE square plus DE square. What is DE? ये 2A है, ये A है, टोटल 4A है, तो 4A minus 2A minus A, that is A. So this is A. So plus DE square. So AD square is equal to A is 12A square and DE हमने निकाला अभी A square. So AD square is equal to 13A square. हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रूव करना है 16AD square is equal to 13BC square. तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड. 16AD square is equal to 16 into 13A square. So 16AD square is equal to 13 into 16A square, right? 13 को इस साइड लिख दिया मैंने, is equal to 13 into 4A whole square. ठीक है. और 4A क्या है? 4A is BC. So 16AD square is equal to 13BC square. So we have proved that 16AD square is equal to 13BC square. Question number 13. Wax cylinder of diameter 21 centimeter and height 441 centimeter is chipped off and shaped to form a cone of maximum volume. The chip of wax is recast into the shape of a solid sphere. Find the diameter of sphere. So हमें दिया गया है एक वैक्स का सिलेंडर. ये एक वैक्स का सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर. सो दिस इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है? हाइट है 441 सेंटीमीटर. सो दिस इज 441 सेंटीमीटर. इसको चिप्ड ऑफ किया गया टू एंड शेप टू फॉर्म ए कॉन. अभी इसको कॉन इसमें से बनाया गया. मैं कॉन ऐसे भी बना सकता हूं, लेकिन ये मैक्सिमम वॉल्यूम का कॉन होगा नहीं. अच्छा, यहां तक इसकी हाइट कर दूं तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर भी मैक्सिमम नहीं होगा.
जितनी हाइट सिलेंडर की है मैं उतनी हाइट कौन की लूं, और जो डायमीटर सिलेंडर का है वही डायमीटर मैं कौन का लूं। तो आई विल गेट द कौन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। सो मैं कौन को बनाऊंगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये कौन हमने बना दिया इस सिलेंडर से। सो जो ये चिप्ड ऑफ वैक्स है, ये वाला वैक्स, ये चिप्ड ऑफ जो वैक्स है, इससे हमने बनाया एक सॉलिड स्फीयर, और हमें उस सॉलिड स्फीयर का डायमीटर फाइंड करना है। सो जो ये वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा चिप्ड ऑफ। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो ये वाला जो रीजन है इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नाउ लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी कैपिटल आर। लेट radius of sphere be capital R. So this volume 2/3 pi r square h is equal to volume of sphere. What is volume of sphere? 4/3 pi r cube. So 4/3 pi, radius is capital R, pi r cube. So 3 cancel, pi cancel. So r की वैल्यू उससे रखें हम इसमें 2 into r कितना है, वो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस विल बी 21/2 स्क्वायर, एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज 441 into 4 r क्यूब, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसल, तो आर क्यूब कितना हो गया हमारे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू 21 स्क्वायर, ये एज इट इज रखा है, और ये 441 क्या होता है 21 स्क्वायर। तो इसको मैंने 21 स्क्वायर लिख लिया, और ये नीचे क्या है 2 स्क्वायर, और एक 2 यहां से, तो ये आ गया 2 क्यूब, ठीक है। आर क्यूब इतना आया, इसको मैं लिख सकता हूं 21 into 21/2 का होल क्यूब, taking cube root, r is equal to 21/2 cube root of 21. So radius is 21/2 cube root of 21 centimeter. So diameter क्या होगा इसका डबल। So diameter of sphere is 21, diameter is equal to इसका डबल 21√321 सेंटीमीटर। सो हमने फाइंड कर दिया डायमीटर ऑफ स्फीयर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।